Good morning, students. So once again, welcome back in social science subject live class for standard 9. Okay. Now, so first I would like to ask Akanksha Srivastav. Are you listening, Akanksha? Akanksha, are you listening? Yes, Akanksha Srivastav, reply. Are you able to listen me? Okay. Now, Akanksha, you have to register on Pariksha Pe Charcha. Okay, for yourself as well as for your either mother or father. Okay, and then you will get the certificate. Okay, the certificate looks like the way I send on the WhatsApp. So वो जो सर्टिफिकेट है वो मुझे तुरंत आप अभी क्लास के बाद में पूरा काम कंप्लीट करके भेजेंगे. आकांक्षा, are you listening? Akanksha. Then Shivam Nikhade. You are in which section? Shivam Nikhade, you are in which section? A or B? Shivam Nikhade, you are in which section? Shivam Nikhade, you are in which section? Now rest of the students of 9th B, complete the registration process today itself. Download your certificates, okay, for yourself as well as for your parents, and send me on my WhatsApp. Shivam Nikhade,
चलो, so now just let us start with the revision portion for today. Okay, so rest we'll talk later on. Parijan, are you listening? Parijan, are you listening? Have you done the registration on Pariksha Pe Charcha? Parijan, have you done the registration on Pariksha Pe Charcha? So do the registration today itself. Okay. और आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है तो एक रजिस्ट्रेशन आपका खुद का होगा एज ए स्टूडेंट और एक रजिस्ट्रेशन आपको करना है अपने पेरेंट का. ओके, सो टॉक टू योर फादर और दोनों रजिस्ट्रेशन आज ही करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर दोनों सर्टिफिकेट सेंड करना है. गॉट इट? ओके, थैंक यू. सो today we are going to discuss or start with a new topic. Okay, कल हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था. So today we are going to start with a new topic, revision. Okay, and the topic that we are going to take is what it is: guiding values of Indian Constitution. Okay, so what is today's topic? The guiding values of Indian Constitution. ठीक है, अभी इस सेक्शन में बेसिकली हम किस चीज को डिस्कस करेंगे? What are we going to discuss in this section? Okay, so we are going to discuss what in this section. हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वह कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे कौन कौन से विचार शामिल हैं. अब कौन कौन से विचार से मतलब किन लोगों ने, है ना, किस प्रकार के प्रिंसिपल के बेसिस पर, किन विचारों के बेसिस पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस प्रकार बना, किन लोगों ने बनाया, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये चीज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द व्यू ऑफ 3 freedom fighters of India about what the Constitution of India should be. इस सेक्शन में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस सेक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार होगा या किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. ठीक है, सो इस बारे में हमारे 3 फ्रीडम फाइटर्स ने क्या व्यू प्रेजेंट किए थे. सो बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द व्यू ऑफ महात्मा गांधी about the Constitution of India. Then we discuss about the view of Dr. B.R. Ambedkar about the Constitution of India. Then we discuss the view of Jawaharlal Nehru about the Constitution of India. ठीक है, चलो. So before that, yes, I would like to talk Asmita Saha. Are you able to listen, Asmita? Asmita, you are in which section? Asmita Saha, you are in which section? Sir, door close kar. You are in which section, beta?
ठीक है, ओके, चलिए. So now, so we are going to discuss about the views of three people from India. Okay, so first we are going to discuss about view of Mahatma Gandhi. That is, what Mahatma Gandhi, what do Mahatma Gandhi says about the Constitution of India? Okay, so what he has spoken, he spoke that I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. Okay, so what actually he wanted to say? Okay, he says that, sorry, it should be said, he said that Indian Constitution would relieve India. Indian Constitution would relieve India from all thraldom and patronage. ठीक है? So he said that Indian Constitution would relieve, okay, he said that Indian Constitution would relieve India from all thraldom and patronage. So महात्मा गांधी का अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या व्यू था, क्या विचार था? He says that कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियंस को, भारतीय लोगों को सारे थ्रेल्डम, नाउ थ्रेल्डम का बेसिकली मतलब है गुलामी या पराधीनता, गुलामी या पराधीनता. तो महात्मा गांधी क्या बोल रहे थे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस प्रकार बनना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे, भारतीयों को सारी गुलामी और पराधीनता से स्वतंत्र करवा सके. ठीक है, गॉट इट? देन the next thing that he spoke about the constitution is what? Okay, he said that, okay, Indians must have voice. Indian must have right to decide for what is happening in the country. What is happening in the country. Okay. So he said that Indians must have right to decide for what is happening in the country in spite of their status, in spite of their status. ठीक है? So he said that Indians must have right to decide. ठीक है? He said that Indians must have right to decide for what is happening in the country in spite of their status. ठीक है? ये सेंटेंस बेसिकली क्या बोल रहा है? ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि महात्मा गांधी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे. ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में महात्मा गांधी का विचार क्या था? वो ये कह रहे थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें इंडियंस मस्ट हैव राइट टू डिसाइड
for what is happening in the country. इस देश में क्या हो रहा है, कौन सा लॉ बन रहा है, कौन सा लॉ नहीं बनेगा, क्या होगा इस देश का भविष्य, वो डिसाइड करने का अधिकार किसके पास होना चाहिए, इंडियंस के, इन स्पाइट ऑफ देयर स्टेटस। मींस चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को क्या इस देश के बारे में सोचने का, इस देश के बारे में डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए। ओके, सो व्हाट ही सेज, there shall be no high class and low class of people. There shall be no high class or low class of people. Okay, now there shall be no हाई क्लास और लो क्लास ऑफ पीपल। व्हाट डज इट मीन्स, कि लोगों के बीच में हाई क्लास या लो क्लास जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट एक्चुअली महात्मा गांधी वांटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो महात्मा गांधी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे जिसमें लोगों को हाई क्लास और लो क्लास के बेस पर डिवाइड नहीं करें। यानी सोसाइटी में तो डिवीजन होता है, परंतु वो डिवीजन किसमें नहीं होना चाहिए, द डिवीजन शुड नॉट बी देयर इन, द डिवीजन शुड नॉट बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। डिवीजन कहाँ नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन व्हाट ही वांटेड टू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चाहते थे। ठीक है, सो व्हाट ही वांटेड टू, और व्हाट ही वांटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वांटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन must provide the condition in which okay, all communities shall live in perfect harmony। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द कंडीशन। तो महात्मा गांधी क्या कहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द कंडीशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी। यानी इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बने जिसमें वो सारी व्यवस्थाएं मिलना चाहिए जिसके जरिए क्या होगा, ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी। इस देश के सारे लोग परफेक्ट हार्मनी मतलब प्रॉपर तरीके से मिलजुल कर रह सकें। ठीक है, देन so these are what the aspirations of Mahatma Gandhi from the Constitution of India। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ये एस्पायरेशंस किसके थे, महात्मा गांधी के। यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार होना चाहिए, ये किसके विचार थे, महात्मा गांधी के विचार थे। ठीक है, देन what is the next thing he wanted to be there in the Indian Constitution? So what he says, there should not be
the practice of untouchability. There should not be the practice of untouchability. महात्मा गांधी क्या कह रहे थे कि हिंदुस्तान में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें क्या नहीं हो, अनटचेबिलिटी नहीं हो, यानी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो किसको दूर करे, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी को दूर करे. ठीक है. देन नो यूज ऑफ drugs or intoxicating drinks. ठीक है. क्या नहीं होना चाहिए? There should not be the use of drugs or intoxicating drinks. तो महात्मा गांधी क्या कहते थे कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनना चाहिए जिसमें अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत नहीं हो हिंदुस्तान में. ठीक है. ड्रग्स मतलब नशीली दवाइयां, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक मींस अल्कोहल. तो महात्मा गांधी कह रहे थे कि इस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए जिसमें छुआछूत ना हो, ड्रग्स का यूज ना हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक यूज नहीं होना चाहिए. ओके. सो women will enjoy the same right as men. ठीक है. It means what he wanted to say is that there shall be equality for men and women. ठीक है. So अगला विचार, the next thing that Mahatma Gandhi wanted to tell is what? There shall be equality for men and women. मैन और वुमेन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए. सो देयर शैल बी इक्वालिटी फॉर मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए. ओके. आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. ओके. सो ये चीज महात्मा गांधी कह रहे थे, है ना, कि दीज should be the basic principles on which the Constitution of India should be framed. हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस प्रकार बनना चाहिए. ठीक है. Now these are what the views of Mahatma Gandhi about the Constitution of India. तो महात्मा गांधी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये व्यूज थे. ठीक है. Now, the next thing that we are going to discuss is about the view of Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so next thing that we are going to discuss is what view of Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so now we are going to discuss about the view of Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है. अब हम किसके व्यू डिस्कस करेंगे? डॉक्टर B.R. Ambedkar के. ओके. कि what are the views of Dr. B.R. Ambedkar? Okay, so what Dr. B.R. Ambedkar says. ठीक है. So what Dr. B.R. Ambedkar says, he says that, just a minute beta. Okay, so what Dr. B.R. Ambedkar speak about. Okay, so what he says that while adopting the Constitution of India, okay,
और ये जो व्यूज थे, these views were represented or expressed by Dr. B.R. Ambedkar, okay, on 26th of January. ठीक है, सो ये जो विचार थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कब एक्सप्रेस किए थे? 26 ऑफ जनवरी को. ठीक है, सो व्हाट ही सेज दैट व्हाइल अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, वी हैव equality in politics. We have equality in politics. So Dr. B.R. अम्बेडकर ने 26 जनवरी को जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तब अपने ये विचार व्यक्त किए. क्या बोला कि while adopting the constitution we have equality in politics. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं. We have equality in politics. हमें पॉलिटिक्स में क्या मिल रही है? इक्वालिटी. ओके, बट we will face okay, inequality in social and इकोनॉमिक फील्ड. तो जब 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, व्हाट ही सेज दैट वी आर हैविंग इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, है ना. जैसे ही हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं हमें पॉलिटिक्स में क्या मिल रही है? इक्वालिटी. तो व्हाट ही वांटेड टू से, पॉलिटिक्स मींस recognizing the principle of one vote, one person, one value. ठीक है, so politics में equality in politics कहां से आएगी? By recognizing the principle of one person, one vote, one value. So वहां से क्या मिल रही है? Equality. But the people will face inequality in social and economic life. परंतु सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में what the people are going to face, they are going to face inequality. तो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में the people has faced what? The people have faced social and economic inequality. ठीक है, so what they says, ठीक है, due to economic and social structure, due to economic and social structure, due to economic and social structure of Indian politics, due to economic and social structure of Indian politics, okay, we cannot assure social and economic equality. ठीक है, उनका क्या मानना था कि इंडिया में जो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर है इंडियन का, है ना, इंडिया में जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो इस प्रकार से है कि वी कैन नॉट एश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी. हमारे इंडिया का जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है कि हम क्या श्योर नहीं कर सकते? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी श्योर नहीं कर सकते. ठीक है, सो दीज आर व्हाट द व्यूज ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो we are winding up today's session here only. Okay students,
So we'll continue the revision in coming classes. Okay. So that's all for today. And before binding up, again the reminder for, okay, filling the registration for Pariksha Pe Charcha. So Parijan and Akanksha Srivastav, your certificates must reach to me within 1 hour. 1 घंटे के अंदर अपने अपने सर्टिफिकेट्स मेरे पास भिजवा दो. Thank you, students. Goodbye.